अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि अब पेपर का सीज़न आ चुका है। तो आज मैं 10th क्लास का पेपर अपलोड करूंगा क्योंकि फ़र्स्ट पेपर जो फेडरल बोर्ड का आया है बच्चों, वो फिज़िक्स का है बच्चों। तो पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर वाइज, कि जो चैप्टर में से भी और एक्सरसाइज में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं वो उसकी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 10 है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाई टेम्परेचर रिमेन मॉडरेट बिटवीन द समर एंड विंटर इन कोस्टल एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाटर यूज एज कूलिंग एजेंट इज व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये तीनों क्वेश्चन आपके चैप्टर के अंदर से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू लैंड एंड सी ब्रीज फ्रॉम एंड व्हाट रोल डू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी वाटर प्ले इन द ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर हावर्स विदाउट फ्लिपिंग with their wings and glider able to rise riding on the thermal current। तो आप एक काम करें, आप कॉपी और रजिस्टर साथ रख लें और ये क्वेश्चन नोट करते जाएं। जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी इन सब के क्वेश्चनों के आंसर भी साथ आएंगे, तो उससे आपको इजी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वेपोरेशन causes कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ वेपोरेशंस। क्वेश्चन नंबर 9, what difference between real and apparent volume expansion। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, differentiate between latent heat of fusion and vaporization। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, explain melting and solidification, boiling and condensations in the term of energy transfer without change in temperature। क्वेश्चन नंबर 12 है, describe the uses of cooling and causes by evaporation in refrigeration process without using harmful CFCs। ये आपको चैप्टर नंबर 11 से है बच्चों क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉट प्रेशर ऑफ गैस इन द कंटेनर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑफ emissions, observations and reflections and infrared radiation। आगे बच्चों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 आपका वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ फूड इज प्रिजर्व बाय डिपोजिशन एंड सब्लिमेशंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द फीचर ऑफ अ वेव इन द टर्म ऑफ वेव फ्रंट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड्स, crust and trough concentrations and relationship between C equal to F lambda। Question number 18 है, differentiate between mechanical and thermo electromagnetic wave। Question number 19 है, differentiate between semix S and P wave। Question number 12 है, differentiate between longitudinal and transverse wave। Question number 21 है बच्चों, how wavelength and gap size affect differentiation in the edge। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, व्हाट विल हैपन टू वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव इन रिपल टैंक इन द वेव एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट ऑफ वाटर। आगे चैप्टर नंबर 13 है, साउंड, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंफ्रासोनिक्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। Question number 25 है, justify why sound wave cannot travel in vacuum। Question number, write any 3 uses of ultrasound in our daily life। Question number 27, differentiate between pitch and loudness। Question number 28, discuss how change in amplitude and frequency affect the loudness and pitch of the sound of wave। बच्चों, हम आपके लिए बहुत कोशिश से ये वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे लिए एक ही काम कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, और डिफरेंट साउंड
source produce sound wave with different timbre. Question number 13. How do the wavelength of the wave change in frequency is double in the medium while the speed remain constant? Question number 21. Why does sky appear blue during the day? Question number 2. Differentiate echo and mention necessary condensation for a human being of the echo. Question number 33. Compare rarefaction and diffraction of sound. आगे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 14 शुरू होता है. चैप्टर नंबर 14 है आपका बच्चों फाइंड द टर्म नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रेफ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 35 है डिफरेंशिएट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर अप्लाई स्नेल लॉ. क्वेश्चन नंबर 36 है ड्राइव रिलेशनशिप एन इक्वल टू 1/sin थीटा. Question number 37 है mention any three differentiate between real and virtual image. Analyze the nature converging and thin diverging lengths of the parallel beam of the light. Also explain when will a converging lens act magnifying glass with rare diagram. Question number 41 है differentiate between short sightedness and long sightedness. Also draw a raw diagram magnification and we can calculate it. Question number 43 है differentiate between conductor and insulator. Differentiate electromagnetic induction and give one example. Question number 45 explain how charge of incidence by fractions, condensation and induction. Question number 46 है differentiate between electric field and electric field lines. 47 है explain conventional flow of current. आगे बच्चों चैप्टर नंबर 16 है. चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका differentiate alternating and direct current by using current time graph. Question number 49 है differentiate between potential difference and EMF. 15 question है define Ohm law and write its limitations. 51 है interpret current voltage graph for a resistor and constant resistance, a filament lamp and a diode. आगे बच्चों चैप्टर नंबर 17 है draw electric diagram of generator, potential divider and resistor, thermistor, light dependent resistors and light emitting diode. आगे बच्चों 54 है justify the advantage of conducting lamp in a circular relationship P equal to VI and E equal to VIT. Question number 56 है define the term kilowatt hour, calculate the cost of electricity application in the energy 1 kilowatt hour. 57 है what happen when a live wire touch a metal case in the earth. 58 है why the outer case in electric applications must be either non-conducting, double insulator or a earthate. आगे चैप्टर नंबर 18 है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वैसे 59 है differentiate between forward and reverse bias base. 60 है differentiate between extension and intransition semiconductor. 61 है why do paravalent impurities called donor and trivalent acceptor. आगे 62 है बच्चों differentiate between n type and p type semiconductor. 63 explain the working truth table and action of the logic gate and or NAND nor not. Question number 64 है what is the daily life of logic gate, buzzer alarm or fire extension. 65 है compare digital and analog electronics. और 66 है describe the term of electromagnetic induction and how it's working. 67 है बच्चों क्वेश्चन what factor affect magnitude of EMF, describe the Lenz's law and how it explains the fact in the current is indicated. Number 69 है बच्चों sketch and interpret graph of EMF against time or symbol
alternating current generators. 17. Explain the working principle of solenoid. 21. How magnetic field is affected by changing magnitude and direct and direction of current. 72. A turning effect that is experienced by current carrying coil in a magnetic field increases by increasing A. The number of turns in a coil, the current, the strength of magnetic field. Figure out relationship Vp बटा Vs equal to Np बटा Ns जो आपका ट्रांसफार्मर के अंदर से आता है. 74. Explain the main region of electromagnetic spectrum in order of frequency and order of wavelength. Figure out the speed of all electromagnetic waves in a vacuum and air. 76. A whole spectrum of light by vacuum in the air give the sky its blue color during the day and its shades of red during sunset. Define the term proton and neon number. 78. Explain the concept of isotopes. 79 है बच्चों. Describe spontaneous and random emissions of a radiation of a nucleus. 80. Compare alpha, beta and gamma radiation. 81. Justify the order of strength of three types of radiation in terms of their ionizing effect, penetrating power and diffraction in a magnetic and electric field. Explain the term of radioactive decay and how it occurs. 83. Explain the law of conservation of energy. 84. How carbon dating is being helpful in our daily life. Or 85. How figure out the relationship E equal to mc square. Long question है बच्चों. First important long question है what is conduction. Explain it on basics of kinetic theory of solid. What make the metal better conductor than the other substance? Why copper rod heat up or more quickly than wood rod? How conservation is important in maintaining marine life? Question number 3 है what factor affect the linear and volumetric thermal expansion of solid? Question number 4. Explain application uses and consequence of thermal expansion in real life. Give example. Explain how global warming contribute to extreme weather event. Hurricanes, heat wave, flooding, airfall, rainfall, wildfire, droughts and winter storm. Question number 6 है बच्चों analyzing everyday application of conduction, convention and radiations. इसमें ए आपका हीटिंग on object such as kitchen pan, heating on a room by convention, measuring the temperature using an infrared thermometer, using thermal insulations in a building, mechanism of household hot water system. Explain the concentration of ripple tank and also explain the phenomena of reflection, refraction and diffraction. Question number 8 है बच्चों explain the phenomena of total internal reflection. What are the necessity to conduction for total internal reflection? Derive formula for refractive index in the term of critical angle. Question number 9 है explain dispersions of light by prism. Question number 10 explain concentration of electroscoping and its working principle. Discuss daily life application of electrostatics. Explain the resistance and figure out the factors which affect material resistance. Question number 13 explain temperature dependence of resistivity. Question number 14 calculate the total EMF where several source of range in the series and parallel. 15 calculate the combined resistance of two or more resistors in series and parallel. Question number 16 analyze function of variable potential divider in circuit using equation R1 बटा R2 equal to V1 बटा V2. Question number 17 explain the working of diode and action of light emitting diode LED. Explain construction and working principle of AC generator and help and how slip
Ringing and brushes work. Question number 19 है discuss the operation of an electric motor reducing the action of split ring, commutator and brush. 20 explain the principle using in a working of iron core transformer and its type step up and step down. Question number 21 है describe nuclear fission and fusion with example. और 22 explain the concept of half. सर ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इस बुक के। चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 है। चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 12 के चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन 2, 4, 5, 7 है। चैप्टर नंबर 13 के 2 और 3 है। चैप्टर नंबर 14 के 1, 3, 4, 5, 6, 7 है। 15 के 2, 3, 4, 5, 6 16 चैप्टर के 1, 3, 6, 7, 8 17 चैप्टर के 1, 2, 5, 6 चैप्टर नंबर 18 के ऑल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 19 के भी ऑल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 है। चैप्टर नंबर 21 के है बच्चों आपका क्वेश्चन 1, 2, 5, 7, 8 और 9 है।